Yes, beta. The home financing Musharaka is here. Simple. Home financing Musharaka is also called diminishing Musharaka, diminishing partnership. This is the latest form of Musharaka. Sometimes international persons, Western economists say that Musharaka is a old term, is an old mode of financing that is not possible to implement in the current world. But we say that this is able to be implemented in the current scenario in the different forms. So the latest form, many latest form of Musharaka are here in the real world. The one latest form of Musharaka is co-financing Musharaka that is called diminishing partnership. That is partnership. Mean this is allowed in Islamic banking, in Islamic economics. So in home financing Musharaka, what is the actual picture of home financing Musharaka? That is very important to be concentrated. In home financing Musharaka, the customer forms a partnership with the bank, financial institutions with the bank for the purchase of a home, of a property. The customer forms a partnership, makes a partnership with the bank for the purchase of a home. The financial institutions rents out its part of the property to the client. दोनों पार्टनरशिप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 80% शेयर बैंक का है, 20% शेयर किसका है, क्लाइंट का है, कस्टमर का है. अब जो बैंक क्या करता है, पार्टनरशिप के बाद 80% शेयर को क्या करता है, रेंट पे दे देता है. किसको दे देता है, क्लाइंट को, कस्टमर को दे देता है. एंड रिसीव कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ रेंट. अब क्लाइंट कस्टमर घर को यूज करता है, उसकी कंपनसेशन के अगेंस्ट क्या मिलता है, उसको रेंट मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन म्यूचुअली एग्रीड फेयर मार्केट वैल्यू. दैट इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू. जो बेटा मार्केट में रेंट रनिंग पोजीशन में होता है वही मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल मार्केट में रेंट है 1000 रुपी, तो 1000 में 1000 टोटल रेंट है. अब 1000 में से कितना रेंट कस्टमर क्लाइंट बैंक को पे करेगा, 800 रुपी. क्यों, 80% का ऑनर बैंक है, तो 80% का रेंट कितना होगा, 800. 100% का रेंट कितना होगा, 1000. 20% रेंट किसको जाएगा, क्लाइंट को. क्लाइंट ऑलरेडी उसका ऑनर है. 800 रेंट किसको जाएगा, बैंक को. ठीक है, एंड दैट इज ओके. नाउ any amounts paid above the rental value, any amounts paid to the bank above the rental value increases the customer share in the property. Increases the customer share in the property. अब कस्टमर क्या करता है, 1147 रुपी हर माह पे करता है बैंक. 1147 रुपी में से 1000 रेंट, 1000 रेंट में से 800 रेंट बैंक को चला जाएगा, 200 रेंट क्लाइंट को चला जाएगा. क्लाइंट ऑलरेडी उसका मालिक है, तो 800 रेंट बैंक को चला जाएगा. टोटल फिक्स पेमेंट जो बैंक को गई है वो कितनी है, 1147 रुपी में से 800 रेंट में चला गया. रिमेनिंग पेमेंट कितनी है, 347 रुपी. सो दिस एक्स्ट्रा पेमेंट above the rental value increases the customer share. अब 347 एक्स्ट्रा पेमेंट क्लाइंट से, कस्टमर से
बैंक के पास चली गई हैं. Extra payments will increase the share of client, customer, and reduces the share of bank. That is very, very simple explanation of to unmute. Share screen. Okay. Sorry for disturbance, maybe internet problem. So home financing musharaka, diminishing musharaka, that is a kind of musharaka. Now again, I'm going to explain. In home financing musharaka, two parties. One is customer, the second one is bank. Both parties make a partnership. Makes a partnership. Here, clients make a partnership to buy a home the from the bank. So this partnership is held with the share of 20% for client, 80% for bank. Later on, both parties decide the rent according to the market value, according to the market conditions. Both decide rent 1,000 rupees. Now, within 1,000 rents, out of 1,000 rents, 1,000 is the rent of total property, total home. So this rent is the rent of total home. So out of total rents, 800 rents will be for the bank and 200 rent for the clients, because 20% is 20% ownership of the home is for the customer, and bank's ownership is 80%. So according to the ownership, the rent will be distributed. 20% rent will be for customer, 80% rent for the bank. 80% of 1,000 is 800, 20% of 1,000 is 200. 200 for customer, 800 for the bank. This is the first condition. Second condition, both agree upon the fixed payment. Both agree upon the fixed payment, that is 1147. That is 1147. Okay, 1147 rupees the fixed payment. Now, how much amount is the extra payments? 1147 rupees total fixed payments, 800 rents. Extra payment is 347 rupees, which is received by the bank. This extra payment received by the bank. Okay. So this extra payment will increase the customer ownership. This extra payment will increase the customer ownership and decrease the bank ownership. Now we are going to the bank ownership. The total price of bank, the total price of home is $1,50,000. 1,50,000. 1,50,000 means 1,50,000 means now actual ownership of bank. Now actual ownership of the bank
is 1,20,000 dollars. Reason: actual price of the home 1,50,000. The share of bank in 1,50,000 is 1,20,000. The share of customer in 1,50,000 is 30,000. Because customer share in home is 20% and bank share is 80%. Okay. Now we subtract extra payment 347 rupees from the bank ownership 1,20,000. The remaining payment is 1,19,653 dollars. That is current bank ownership after the deduction of $347. This is the first month of home financing. Now we are going to the second month of home finance. Similarly, the customer will pay $1,147 in the second month. And now, how much amount will be the rent? After the deduction, अब बेटा यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं करना चाहूंगा. बैंक की ऑनरशिप है यहाँ पे 80%. वो ऑनरशिप कितनी बनती है 1,20,000. जब एक्स्ट्रा पेमेंट $347 आप डिडक्ट करोगे, अब बैंक की ऑनरशिप कितनी बनेगी 1,19,653 बनेगी. अब ये देखना है बैंक की ऑनरशिप कितने परसेंट है और कस्टमर की ऑनरशिप कितने परसेंट है आफ्टर द डिडक्शन. अब बैंक की ऑनरशिप बेटा कम होगी, वो कितनी बन गई अब 80% नहीं रही. अब आप क्या करेंगे 1,19,653 ये 1,50,000 का कितने परसेंट बनता है? ये बेटा बनता है 79.9 समथिंग परसेंट बनता है. 79.9 समथिंग परसेंट बनता है. अब सेकंड मंथ में कस्टमर कितनी फिक्स पेमेंट करेगा 1,147 की वही पेमेंट करेगा. अब इसमें रेंट कितना जाएगा? इसमें रेंट जाएगा बेटा अकॉर्डिंग टू द बैंक शेयर. बैंक का शेयर कितना है 79.8 समथिंग परसेंट. 79.8 समथिंग परसेंट. ठीक होगी बात. अब जितना शेयर होगा 1,000 में उतना रेंट जाएगा. पहले 80% शेयर था 800 रेंट था. अब शेयर कितना है 79.8 समथिंग परसेंट है. अब रेंट कितना होगा $798. अब रिमेनिंग पेमेंट कितनी होगी 1,147 रुपये में से 1,147 रुपये से 798 जो बैंक को रेंट चला गया है वो निकाल दें. रेंट के बाद एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी बनेगी $349. $349 एक्स्ट्रा पेमेंट बैंक के पास जाएगी तो बैंक की ऑनरशिप कितनी हो जाएगी? आप 1,19,653 में से $349 निकाल दें. रिमेनिंग अमाउंट बनेगी बेटा $1,19,304. ये बेटा है बैंक की करंट ऑनरशिप. ये बेटा 180 मंथ जो बनते हैं बेटा अराउंड अबाउट 15 ईयर्स 15 साल तक ये पार्टनरशिप चलती जाएगी. और इन द लास्ट मंथ टोटल फिक्स पेमेंट कितनी होगी बेटा पूरी. क्यों? एक्स्ट्रा पेमेंट जब एक्स्ट्रा पेमेंट बैंक को जाएगी तो बैंक की ऑनरशिप 0 हो जाएगी. क्योंकि 1,072
जब लास्ट मंथ में कस्टमर पेमेंट करेगा, फिक्स पेमेंट करेगा, 1147 नहीं करेगा, 1072 में से रेंट कितना जाएगा? $7। क्यों? अब बैंक का शेयर ही $7 के इक्वल रह गया है, वो बहुत कम शेयर रह गया है, पॉइंट समथिंग में शेयर है उसका बैंक का। एक होगी बात। $7 रेंट पे चला जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी होगी? $1065। $1065 ही बैंक की ऑनरशिप थी। ये बैंक को पेमेंट होने के बाद बैंक की ऑनरशिप हो जाएगी 0। फाइनली द ऑनरशिप विल बी ट्रांसफर after the last amount, after the final payment by the customer, the with the passage of time, we can say that with the passage of time, bank ownership will be decreased and the customer ownership will be increased. Finally, the final ownership will be transferred to the customer, and the final ownership, after the transfer of final ownership, the bank, the customer will be the sole owner of the home. The sole owner of the home. In this way of partnership, the customer is financed by the bank in an Islamic way that is totally interest free, that is not interest based. Here, one thing is very important in case of late payment. For example, in any month, customer is late for payment. He could not pay timely. In this case, if the customer has some excuse, then the bank will be lenient about the payment. He will give some time, extra time for the payment. But in case of if he is accused negligent, then bank can implement some penalty. But that penalty will go to the charity accounts, not for the bank, because in this way, if this extra amount will go to the bank, then it will be considered interest rates. But this extra penalty amounts will be considered charity, and this charity will go to the charity account, not in the bank account. तो मेरा ख्याल है अब आप समझ चुके होंगे कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा पेमेंट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बैंक की ऑनरशिप कम होती जाएगी, कस्टमर की ऑनरशिप बढ़ती जाएगी, फाइनली सारे का सारे ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी कस्टमर की तरफ, और जो कस्टमर होगा वो सोल ऑनर होगा। ये बहुत इजी बेटा वे ऑफ फाइनेंसिंग है। So that is the simple explanation of financing का diminishing partnership जिसको बोल देते हैं। Now we are going to the criticism on Musharaka mode of financing. This is our next part of the lecture. So the Musharaka is criticized with two ways. The first criticism is that already I have discussed. Mostly Western economists consider this mode of financing is old mode of financing in the time of Holy Prophet, peace be upon him, that is not able to be implemented in the current time period. So that is considered not suitable for the current time, modern time period, for the modern world. So when we when we think deeply this mode of financing, we study deeply this mode of financing, so this criticism is unjustified. Unjustified because Islam did not specify a specific form of musharaka. Specific procedure of musharaka did not prescribe it. But Islam sets broad principles of musharaka that can accommodate all forms and procedures of musharaka, like home financing musharaka, that was a partnership
that was not exist in the old time periods, but it is halal because it just was not introduced and included in any step of home financing musharaka. So any new form or procedure of musharaka will be suitable to finance uh, customer needs. It cannot be rejected, although it has no precedent in the past, because it is acceptable, because it does not contradict to the Sharia rules. It does not contradict any Sharia rule. So it is not necessary that Musharaka should be implemented only in the traditional times. We can implement with different latest forms in the modern world. This is the first criticism. Now we are going to the second criticism. Modern world, Western world, they criticize Musharaka in such a way that this and that Musharaka is based upon the issue of profits. Musharaka is based on the issue of the second criticism is that Musharaka, Western institutions say that, support that Musharaka basically based on the issue of profits being granted to some by some financial institutions. So Musharaka then is the most authentic form of Islamic financing. The risk in case of Musharaka associated with sharing losses means it is not popular mode of finance. They criticize that the of risk introduction of risk in Musharaka that can be appeared in the form of loss. Sharing loss means it is not popular. मॉडर्न वर्ल्ड यही कहती है कि अगर आप मुशारका में रिस्क की बात करेंगे, इसके मीनिंग क्या होंगे, रिस्क के मीनिंग क्या होंगे कि आप लॉस शेयरिंग की बात कर रहे हैं। लॉस शेयरिंग किस केस में ये कोई पॉपुलर मोड ऑफ फाइनेंसिंग नहीं देगा कि लोग पार्टनरशिप प्रॉफिट की बेस पे करते हैं। जब बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट की गारंटी होती है फिर ही वो पार्टनरशिप करेंगे, अदरवाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्टनरशिप कभी भी नहीं करेंगे। दैट इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस वक्त ही पार्टनरशिप करेंगे जब उनको प्रॉफिट की गारंटी हो। अगर रिस्क की बात करेंगे, इस्लामिक फाइनेंसिंग की बात को कंसीडर करते हुए, देन लॉस शेयरिंग होगी। लॉस शेयरिंग केस में क्या होगा, ये तो पॉपुलर मोड ऑफ फाइनेंसिंग नहीं होगा। ठीक हो गया? क्यों? फिर बैंक फाइनेंस करेंगे। Here now Islamic scholars report that they report that to make any product of Musharaka appealing for the customer, some financial institutions introduce granted profit in Musharaka to make more appealing Musharaka for the customer. Some financial institutions have started granting profits in Musharaka. So when Islamic scholars report that when financial institutions will guarantee the profit in Musharaka,
then these institutions are contradicting to the basic principle of Islamic finance, which require, which link rewards to the risk by doing, by granting profits in Musharaka mode of financing by the financial institutions. They are contradicting, they are against the basic rule of financing, Islamic rule of financing, that link, which link reward to the risk. इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि ऐसा करने से आप फाइनेंसिंग तो कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे या प्रॉफिट गारंटेड होगा, तो बहुत सारे लोग बैंक्स में, इस्लामिक बैंक्स में आज इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, करेंगे भी। इस्लामिक बैंक के अकाउंट ओपन है, उनको बैंक गारंटी देते हैं प्रॉफिट की। अगर बैंक लॉस की बात करें, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मॉडर्न वर्ल्ड यही कहती है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, अगर ऐसी बात करेंगे देन ये इस्लामिक इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, दे आर वर्किंग अगेंस्ट इस्लामिक रूल्स ऑफ द लॉ ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। लॉ ऑफ इस्लामिक फाइनेंस क्या है? लॉ ऑफ इस्लामिक फाइनेंस लिंक रिवॉर्ड्स टू द रिस्क। अगर प्रॉफिट की गारंटी देंगे देन रिस्क खत्म हो जाएगा। ये ऐसे ही होगा जिस तरह इंटरेस्ट की तरह हो जाएगा। अगर इस्लामिक बैंक प्रॉफिट की गारंटी दे दें, इसका मतलब क्या होगा कि वो आपके कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। सो पॉसिबल है कि इस तरह इस्लामिक बैंकिंग ग्रो कर जाए, लेकिन लॉन्ग रन इसकी कॉस्ट क्या होगी? बेनिफिट्स को खत्म कर देगी। ओके, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या है? इस्लामिक बैंक ग्रो करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे क्या होगा? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपको नजर नहीं आएगी। So in the short run, Islamic bank will be grown, but in the long run, its cost will outweigh the benefits. That is actual investments. That is actual investment, visible investments. That is higher level of employment, higher level of output in the country. So this kind of movements from Western world will be not will not be acceptable for Islamic economics, because apparently it looks attractive, but in the long run it is very dangerous for Pakistan and for Islamic economic system. Now we are going to